हमारे इंडिया में लोग अल्कोहल के कितने शौकीन हैं, ये हमें लिकर शॉप्स के बाहर क्राउड को देखकर अच्छे से पता चल जाता है। और अगर किसी का ध्यान इन शॉप्स के ऊपर ना भी गया हो तो 2020 के कोविड लॉकडाउन में उन्हें हमारे देश के अल्कोहल कंजम्पशन के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। I'm at a liquor store in Gold Market in Central Delhi, and you can see a huge number of people have gathered here. There's a huge crowd. There's also a lot of chaos here. हम लेने आए हैं एक बोतल 2 पौवे। इंजेक्शन फायदा नहीं करेगा, ये अल्कोहल फायदा करेगी। ये दवाई से हमारे को कोई असर नहीं होगा, हमारे को पैक से असर होएगा। The police here is ensuring that people maintain social distancing. मेरे को 35 साल हो गया पीते हुए, मैंने आज तक कोई डोज नहीं ली दूसरी। ये लेती हैं एक पैक रोज का, उसमें हमारी डोज चलती है। पर जनरली हमारे लोगों के कंजप्शन पैटर्न्स में काफी वेरिएशंस हैं। कई लोग देसी कच्ची दारू प्रेफर करते हैं, कई रम या विस्की, और आजकल तो कई मेट्रो सिटीज में वाइन का कल्चर भी काफी पॉपुलर हो रहा है। डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस वेरिएशंस, देयर इज अ सिंगल ब्रांड ऑफ अल्कोहल जो कि हर इंडियन का फेवरेट है। टू विंटर्स ड्रिंक क्या करते हो? रम एंड कोक, ओल्ड मंक सबसे अच्छी लगती है, इसलिए क्योंकि सबसे इजीली अवेलेबल है, सबसे सस्ती है। हम लोग ओल्ड मॉन्क पीने वाले लोग। ये एक टाइम पे इंडिया की हाईएस्ट सेलिंग अल्कोहल थी, जो कि हर साल 80 लाख बोतल्स बेचती थी। और तो और इसका क्रेज सिर्फ देसी लोगों में ही नहीं, फॉरेनर्स भी इस ड्रिंक के पीछे उतने ही पागल हैं। Perfect pour. Dibosia. God, it's spicy. Like cinnamon flavor? Yeah, that's good. पर लास्ट 10 सालों में ओल्ड मंक के साथ कुछ ऐसे किस्से हुए जिसकी वजह से देयर वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रूमर दैट ये कंपनी शायद बंद होने वाली है और हमें मार्केट्स में इसके बॉटल्स देखने को ही नहीं मिलेंगे। इट ऑल स्टार्टेड इन द ईयर 1855 विद अ ब्रिटिश एंटरप्रेन्योर नेम्ड एज एडवर्ड एब्राम डायर। एडवर्ड ओपन ए ब्रूअरी इन कसौली, जो कि इंडिया की सबसे पहली ब्रूअरी थी, एंड वाज वेरी फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग लायन बियर। दिस वाज इंडियाज फर्स्ट होम ग्रोन बियर व्हिच वाज वेरी पॉपुलर अमंग द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ड्यू टू इट्स डिस्टिंक्ट टेस्ट एंड चीप प्राइस। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, the ownership of the brewery changed hands, and finally post independence an Indian entrepreneur Narendra Nath Mohan became the new owner of the Kasauli brewery, and this laid the foundation for the iconic Indian homegrown drink. NN Mohan acquired large tracts of land in Uttar Pradesh and Maharashtra to build new production facilities. He also diversified into breakfast foods, fruit juices, and even cold storage. But the company's star product, Old Monk, was introduced in late 1950s by his eldest son, Vedratan Mohan. Vedratan Mohan was a retired army colonel who took over the company as its managing director. उन्होंने Old Monk को क्वालिटी, टेस्ट एंड प्राइस का एक यूनिक कॉम्बिनेशन बनाया, जो कि कुछ ही टाइम में ही इंडिया की हाईएस्ट सेलिंग लिकर ब्रांड बन गई। एक्चुअली वेदरतन मोहन once visited Europe, जहाँ पे he was mesmerized by the Benedictine monks, their ascetic lifestyle and the liquor they produced. उन्हीं monks से inspired होके he created the brand Old Monk. The design, shape and the bottle was inspired by a popular Scotch whiskey, Old Parr. Even till date, after the past 6 decades, the name, design and logo of the brand is unchanged. Actually, Old Monk का unique taste comes from 7 years of aging in oak vats, जो कि इसको मार्केट में किसी भी दूसरे डार्क रम से बेटर बनाती है। The drink was made from molasses and infused with a lingering taste of spices and vanilla. With a 42.8% alcohol content, slowly it was getting considered as a man's drink. अपने इसी superior taste and quality की वजह से ये मिलिट्री कैंटीन के एग्जिस्टिंग ड्रिंक को रिप्लेस करके इंडियन आर्मी की फेवरेट ड्रिंक बन गई। कर्नल वेदरतन मोहन एंड उनके छोटे भाई ब्रिगेडियर कपिल मोहन never advertised Old Monk because they genuinely believed that customer loyalty alone is sufficient to carry the brand forward. They relied on word of mouth promotion and were very proud of their brand because they knew that once people had a taste of rum, they will never go back to anything else. Indian markets के साथ साथ it also landed up in the international markets, and there also it became very successful. Old Monk became third largest selling rum in the world. Apart from its taste and quality, इसकी affordability was one of the prime reason behind its popularity. Even today, Old Monk holds a special place in the hearts of every Indian because it is everyone's first drink. एक बहुत ही बड़ा nostalgic value and काफी सारे happy memories जुड़े हुए हैं लोगों के इस ड्रिंक के साथ। लोग अपने बैचलरहुड के बेस्ट टाइम्स को Old Monk के साथ एसोसिएट करते हैं, and drinking Old Monk takes them back to the time when they were wild and free. इसीलिए चाहे आज भी लोग कितने ही सिंगल मॉल्ट विस्कीज पे अपग्रेड ना कर गए हों, they will never say no to a peg of Old Monk. According to a luxury consumer survey, it was revealed that Old Monk was one of the most preferred brand of Indian liquor for high net worth Indians.
सच मित्रा दी ओल्ड मॉन्क चलदी है। और इतने सारे सक्सेस, ग्रोथ एंड लोगों की इमोशनल अटैचमेंट्स के बावजूद ओल्ड मंक एज अ ब्रांड इज फेसिंग सम सीरियस प्रॉब्लम्स। 2003 के टाइम पे ओल्ड मंक अपने पीक पे था एंड इट वाज क्लॉकिंग सम वेरी सीरियस सेल्स फिगर्स, बट ग्रेजुअली इट्स नंबर्स began to decline. In 2005, McDowell's Celebration Rum overtook Old Monk and became the highest selling rum brand in India. 2014 आते आते चीजें इतनी खराब हो गई थी that Celebration Rum was selling 7 times more than the volume of Old Monk. Even in the armed forces canteen, by 2008, Contessa replaced Old Monk as their highest selling rum. धीरे धीरे Old Monk का market share and profits घटने लगे and finally in the year 2014, it posted a net loss of 20 crore rupees. यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि जो नंबर्स में दिख रहा है, रियलिटी उससे थोड़ी सी अलग है। भले ही Old Monk का डाउनफॉल 2003 में शुरू हुआ, but it was in works for almost over a decade. India is on the move again. We shall make the future happen. 1991 के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद द इंडियन मार्केट वाज ओपन फॉर फॉरेन ब्रांड्स. इंटरनेशनल प्लेयर्स लाइक बकाडी एंड कार्लसबर्ग स्टार्टेड एंटरिंग इंडिया एंड दे इंट्रोड्यूस्ड अ बंच ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स विद डिफरेंट टेस्ट्स, फ्लेवर्स एंड वैल्यू प्रोपोजिशंस. बाय लुकिंग एट ऑल ऑफ दीज, homegrown brands like United Spirits and Radico Khaitan realized that they have to up their game. They started marketing and advertising the product very aggressively. But the people at Old Monk didn't think that it was necessary to reinvent. They refused to see any change in the market dynamics and decided to stick to their old principle of not running any ad, and this rigidness cost the company a significant amount of market share over the years. दूसरा प्रॉब्लम था कि इन्होंने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को आउटसोर्स कर रखा था, which they failed to monitor strictly, and this ultimately led to poor decisions regarding the trade channel. जबकि उनके बाकी सारे competitors अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को ओन कर रहे थे, which gave them more negotiation power and trade incentives in the market. It's because for a liquor brand, managing logistics and retail distribution is one of the most critical component of the business. The third problem that they became a victim to the changes of political parties and government policies. Due to unjust political favors, Old Monk के competitors उत्तर प्रदेश and उत्तराखंड में लिकर के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स जीत गए, which gave them complete monopoly over the market. उसके कुछ ही दिनों के बाद a new rule in उत्तर प्रदेश led to shutting down of its brewery in Lucknow. इंडिया के southern parts में तो और एक नया प्रॉब्लम चल रहा था. There, not only the governments have set up their own liquor selling outlets, but have also introduced their own local brands, affecting the sales of Old Monk. Due to this, overnight Old Monk got disappeared from the shelves in Tamil Nadu, जो कि उस टाइम पे इंडिया का one of the largest rum consuming states था. The fourth and the final problem was that कि हमारे देश के लोगों के preferences change हो रहे थे. India was slowly and steadily started getting richer. People started having disposable incomes, which led to the shift in their inclination from rum to premium whiskies. But fortunately, this is not the end for our homegrown Indian brand. The new generation of the Mohan family are implementing few genius strategic plans which might revive this iconic brand. In the last few years, there have been new launches. Old Monk Gold Reserve, Old Monk Supreme, and a range of limited editions are positioning the brand in the premium category. October 2018 में तो the brand also launched Old Monk in the ready to drink category with some very interesting flavors at a price point of 130 rupees. The strategy was to challenge Bacardi's Breezer and capture the market share to enhance its revenue. The company have also started selling beer and Old Monk in Tetra packs under its name. आपको क्या लगता है? Can Old Monk still revive itself and regain its past glory?